रुक जाओ बताता ये हो गया था ना सर क्या मेरा फ्रीज हो गया शायद? क्या फ्रीज हो गया सर वीडियो तो लॉग आउट करके लॉग इन कर अब छोड़ दे उसको नहीं यही से अच्छा है देखते सर हो गया हाँ है ना हाँ Okay, so what we are तुम्हें क्या काम लगा के रखा है? हाँ गाना भी सुनेगा हाँ तो I'm going to do something very unique today. I am going to apply Newton's laws on molecules of gas. Okay, F is equal to ma. F is equal to और क्या formula होता है? F is equal to ma, which also can be written as क्या है? Can be written as delta P by delta. In fact, this is the original. This is the original formula, right? Rate of change of momentum is force. So I want to apply this to gas molecules. But I must warn you that केक बनाना आता है किसी को? तेरे को आता है केक बनाना? तो तेरे पीछे केक हाँ आता है कैसे बनाते हैं? वो तो आंसर ना होना चाहिए ना नहीं आता है कोई बताएगा तो बना दूंगा तो किसको आता है आता है ना क्या कैसे बनाते बैटर कहाँ से मतलब क्या नहीं मेरे को आई वांट हाँ रेसिपी चाहिए हाँ हाँ फ्लावर हाँ हाँ रुक जाना मैं जो बोलता हूँ अब जो बात करेगा उसको रॉ इंग्रेडिएंट खिला देंगे जो भी रॉ इंग्रेडिएंट बोलते हैं उसका हाँ 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 अबे खाना इधर को हटा हाँ नमक वमक भी डाल दे ओ भाई जो केक अरे चुप रहे ना जो केक का रेसिपी होता है राइट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और इट कैन बी मेड एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू वांट इन फैक्ट आई वाज लुकिंग फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहते तो एक आया वो ब्रूस विलिस के सर के शेप में उसने केक बनाया राइट ब्रूस विलिस एक एक्टर है उसके बिल्कुल लाइकलीनेस में उसका
cake बनाना. So a cake can be as complicated as you want. However, Facebook में scroll करते हुए मैंने देखा कि you can make a cake with 3 ingredients without any oven. So उसके the point is we can make a cake with 3 ingredients. I don't know what they are. I don't care what they are. And we can make a cake which is extremely complicated. Right? Both things we can do. And when you make a cake which is extremely complicated, it has to be very detailed. You have to follow some very detailed instructions, right? And you have to have some sort of an experience. ऐसा नहीं है कि मैं उठ के जाके मैं बोलूँ हाँ मैं जाएगा, right? उसी तरीके से applying F is equal to ma on molecules is like making a cake with 3 ingredients. It is the simplest possible analysis that you can. In reality, the molecules of the gas inside this chamber, they do not follow these classical laws. They follow something called quantum mechanics, right? जो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, I hope chemistry में Schrodinger's equation पढ़ा होगा, हाँ उसको हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई किया होगा, रेडियल सॉल्यूशन पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना, रेडियल पार्ट ऑफ. So in reality, we have to apply quantum, but we can just as well apply F is equal to ma. If you apply quantum mechanics, then you are making that complicated wala cake. And if you apply this, you are making that 3 ingredient wala cake. डाला pressure cooker में, I don't know pressure cooker बंद भी करते हैं नहीं. But the point is that this is the simplest possible analysis that I can, right? Will the results be correct when I carry out the analysis, right? Is the answer is going to be the same as will that cake taste like cake? वो जो 3 ingredient वाला है, somewhat like cake, कुछ तो लगेगा ही केक जैसा. तो इसके आंसर्स भी हमारे लिए sufficiently accurate. Okay. So how do we go about applying F is equal to ma on gas molecules? Well, this is a complicated affair. If I start to apply F is equal to ma on every single molecule, I cannot do that. So what I do is I pick out a single molecule here. Okay, single molecule moving in this cubical vessel. Okay. Vessel has to be cubical of side L. So I'm just simplifying the assumption. Cube है of side L, so उसका volume will be L cube, right? This particular molecule is moving with a speed v parallel to one of the faces of the cube, and it is going to hit one of the faces of the cube perpendicular. ठीक है ना? ये सब मेरे assumption. क्या और molecules है अंदर? हाँ है. लेकिन for the sake of simplicity, I am going to assume that these molecules, they do not interact with each other at all. If you remember, this is the same story as the story of the cricket balls inside the room. They don't interact with each other at all. Okay. So how do I then apply this F is equal to ma on one molecule of gas inside this cubicle vessel? There are other assumptions that I have made, some of which I will tell you, some of which I will not. These are all assumptions which you can find in any textbook under the topic kinetic theory of gases. ये किया है उसका केमिस्ट्री में? हाँ सर, फिजिक्स में भी था अभी सीबीएसई एग्जाम्स में. Very nice. So it makes my job very easy now. So when this molecule collides, so what are the assumptions? Kinetic theory of gases. Molecules do not have any internal structure,
right? We are assuming them to be point particles, right? Just like the cricket balls, solid, hard, no internal structure. And we are assuming that the collision of this molecule with this wall will be elastic. That means that its velocity will change, but its momentum. Sir, velocity of separation equals to velocity of approach. हाँ, अगर ये v velocity से strike करेगा, तो ये v velocity से वापस आएगा, right? So there will be no change in kinetic energy, but there will be change in moment. इसको physics में बोलते हैं an elastic collision. E is equal to 1. ये आप लोग इसको करोगे. So F is equal to ma is equal to delta p by delta t. ये मॉलिक्यूल आया इधर, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया और फिर उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, and then it goes. Of course, it will go and then come here and then come back and then come back and then come back continuously. बीच में किसी से कोलाइड, किसी से इंटरेक्ट नहीं. तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ? So this is for one molecule. कितना मोमेंटम चेंज हुआ? mv 2mv 2mv. mv minus mv, right? Minus is plus. So basically I'm asking you, this is the initial momentum, this is the final momentum. Please tell me the difference of these two vectors. The difference of these two vectors is 2m. The sum of these two vectors is 0. So we have 2m divided by what? time Time of what? collision. तो होना क्या चाहिए? Sir, velocity into distance L. नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? डेल्टा p by डेल्टा t. डेल्टा p क्या है? चेंज इन मोमेंटम. और डेल्टा t क्या है? Time in which the momentum has Time changed. in which what has happened? Distance traveled faster. Sir, momentum जितने देर में change हुआ है उतना time. Time in which this momentum has changed. But now we have a problem for which you know the solution. आप लोग बोल रहे हो मेरी problem का solution, क्योंकि time in which this momentum has changed is very difficult to work. I don't know क्यों कितनी देर के लिए collide कर रहा है, वो तो बहुत ही short time के लिए collide कर रहा है. वाह, हाँ बिल्कुल सही बोल. So I cannot work out the time in which this momentum has changed. Right? Therefore, I will cheat. This is the first instance where I will cheat, and there are many instances where I will cheat. Okay. So I will say that delta t, which is the time of the collision of the molecule with the wall. No, I can't work that out. So I will say that this is the time between two collisions. Right? And remember that this is an assumption. What is the time between two collisions? L by V. 2L by V होएगा. Time between two collisions of the same wall, not this wall. Okay, so sir. when it has velocity V, it will go hit this wall. It will take a time of distance upon speed L by V, and then it will come back again L by V. So the time must be equal to 2L by V. This is 2L by mv square by time between two successive collisions with the same wall. Okay? Time between two successive collisions with the same wall. तो अब हमने क्या निकाल दिया? Force applied
by one molecule on the wall. Newton's third law. This is the force applied on the molecule by the wall. Therefore, this must also be the force applied by the molecule on the wall, right? Okay. अब क्या करें? What should I do? Exactly. हाँ, ये 1/3 कहाँ से आ रहा है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z आएगा. I just want an explanation कि ऐसा क्यों है. क्यों इक्वल हो? क्या इक्वल हो? क्यूब है. नहीं. So I have, or we have figured out the force that is applied by one molecule on the wall. Okay? But what do we want to find out? This is not what we want to find out. We want to find out the force applied by all the molecules. Right? So we want to find the force applied by all the molecules. ये कैसे निकालेंगे? क्या करना चाहिए? Number of molecules into the force applied by one. Right? The logic dictates that if you have found the force applied by one molecule, then the force applied by all molecules must be what? N multiplied by, right? So F must be equal to N multiplied by mg square by L, but ये गलत है. This is wrong. This is wrong because of the assumptions that I have made that we have one molecule moving in this direction with the speed of v. So I need to be very careful. Can you tell me what is wrong in this? They might have different velocities. All the molecules, they might have different velocities. In that case, the formula should be N1 into mv1 square by L plus N2 into mv2 square by L, where N1 is the number of molecules having velocity v1, N2 is the number of molecules having velocity v1. Okay. So that is one solution. That is one flaw in this. और क्या flaw है इसमें? और क्या flaw है इसमें? हाँ, बिल्कुल सही. वेरी गुड. ये पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ऐसे ना होकर के कहीं तो टेढ़ी मेढ़ी कंपोनेंट्स है उसके. एक्स एक्सिस के अलाउंग कुछ कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलाउंग कुछ कंपोनेंट है, और जेड एक्सिस के. सो इफ आई वांट टू correct this formula, okay, if I want to make this formula correct, then I must do either of two things. First possibility is that I literally figure out how many molecules have a particular velocity in a particular direction. And then I apply the formula N1 mg1 square by L plus N2. That is one possibility. What is the other possibility? The other possibility is that I multiply by N, but instead of saying that this is the velocity of a single molecule, I can say that this is the Average velocity. average velocity. Right? So this will be valid. This will be valid only if V is average. But now I run into another problem. What is the average velocity of molecules of a gas in a container? What is the average velocity of a molecules of a gas in a container? बहुत ही केयरफुल रहना, बहुत ही केयरफुल रहना. √8 RT by IM is the average speed.
Okay, it is the average speed of all molecules. But we are not interested in average speed. We are interested in average velocity. क्या होगा average velocity? Because remember ये vector type का equation. हाँ? √3 RT by m. ये velocity का नाम होता है √3 square velocity. मेरे को क्या चाहिए? Average velocity. Average velocity क्या होगा? Average velocity क्या होगा? ये एवरेज नहीं होता. एवरेज तो ये होता है ना v1 plus v2 plus divided by n. ये कितना होगा? Remember that this n is a exceedingly large number. Avogadro number type का है. 1 mole of a gas तो बहुत जरा सा होता है ना. ऑक्सीजन का 1 mole होगा तो कितने ग्राम है? कितने ग्राम है? याद है किसी को? 1 mole of oxygen. हाँ, 32 grams. 32 grams is very light, and 1 mole is a very huge number, right? Avogadro number. So, what would happen if I were to add this? So, supposing that we consider that there is an Avogadro number of molecules in this room, right? So that is how much? 0.023. So, if I spot one molecule going in this direction with a particular velocity, right? Then I am bound to spot. If I am able to see all the molecules, then I am bound to spot another molecule going like this, right? Because of the sheer huge number of molecules. अगर एक molecule ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे, तो it is virtually guaranteed कि एक और molecule होगा ऐसे जा रहा होगा 5 मीटर. So the average velocity of the molecules in a gas is always the average momentum of molecules of a gas in a closed chamber like this is always zero. So then ये तो गड़बड़ हो गया. यहाँ 0 रख देंगे, F0 आ गया, काम खत्म हुआ. ऐसा नहीं. क्या करें अब? We need another kind of average. Okay, so there are many types of averages apparently. One of these, another type of average is RMS, root mean square, right? And it literally is what it says. It is the root of the mean of the squares. Okay. So in this case, we write VRMS is equal to root of the mean of the squares. Now, since the velocities have been squared, there is no possibility of them adding up to 0, right? So if I were to take this as VRMS, I would be taking the average velocity, and this would perhaps give me a better value of the force exerted by molecules. However, this expression, if I replace this with VRMS, it's still incomplete. It is incomplete because this force is only calculated for that molecule which is having a velocity along x axis, or perhaps having a component of velocity along x axis. So we will say that this F is equal to n into mvx square by L, where Vx is the x component. अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ. अभी मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि ये जो फोर्स है
ये बहुत एक्यूरेट होगी अगर मैंने यहाँ पे v की जगह vx लिया which is the x component. लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या लेना है? We have already agreed to this that we want an average value. Average value of vx चाहिए. So what I do is this. So since the components will be vx, vy, and vz, right? Again, I will cheat. And this time, I will say that since n is very, very large, okay, therefore, this is called pulling a rabbit out of the hat. Vx is equal to Vy is equal to. Right? I will simply say this because of statistics. Statistically speaking, if I were to pick out one molecule, and if I were to pick out another molecule, or if I were to pick out 5 molecules, and if I were to measure their components, velocity components along x, y, z direction, I would get that to be same. So Vrms squared, which is Vx squared plus Vy squared plus Vz squared, since they are all equal, we get Vx square is equal to Vrms square by, put this here, F is equal to N into M into Vrms square. Okay. तो सुने को मेरे को बोला था कंपोनेंट होना चाहिए वेलोसिटी का। मैंने तो केवल इस डायरेक्शन में ले लिया ना, बाकी का क्या होगा? इसमें हो गया, हमने तो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स निकाली ना, इस वॉल पे फोर्स निकाली ना। अगर इस मॉलिक्यूल का एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में है, तो इसने जो कंटेनर पे फोर्स लगाया वो कहाँ निकाला मैंने? तो केवल ये वॉल पे निकाल दिया। नहीं रख सकते ना, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का। vx की वैल्यू रख रहा हूं ना मैं यहाँ। ओके, अब क्या करें? नाउ व्हाट शुड आई डू? प्रेशर, हाँ, सो प्रेशर देगा। So P is equal to average divided by L square. N Vrms square by real. And L cube is the volume. So what do क्या है ये? N M Vrms square by 3. ये क्या है? ये क्या कहाँ से लेके आ? Pressure on a wall. This is the pressure on the wall, but where have you seen this before? You see, I can write this as कैसे लिखेंगे? PV is equal to 2/3 into N into half into M into Vrms. ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी है ये? एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय n is equal to pressure into volume. This is actually PV is equal to nRT. If you think about it, PV is equal to n. And I told you that this is a measure of kinetic energy. Temperature is a measure of kinetic energy. In fact, I used the temperature is a measure of the average kinetic energy. And this is indeed the average kinetic energy of molecules.
right? अभी आते हैं उसमें वापस आते हैं. So here I can write थोड़ा सा chemistry use करके I can write PV is equal to 2 by 3, sorry, 1 by 3 into N into M into VRMS squared. So what can I do with this N into M? What can I do with this N into M? Mole concept, पहला chapter पढ़ा था लोगों ने. Number of molecules into mass of one molecule. ये क्या होता है? तो total mass हो गया क्या इसका? है ना? So PV is equal to 1 by 3 into the total mass, and I will write this as NUT VRMS divided by volume. अगर मैं करूँगा total mass divided by volume क्या हो जाएगा? Density हो जाएगा. So P is equal to 1 by 3 rho VRMS squared, where rho is equal to total mass divided by volume. So VRMS, if you want to find apparently, will be root of 3P by rho. Okay. And of course now I will use PP is equal to NRT because apparently ऊपर ही आया था. फिर से cheating कर रहा हूँ थोड़ी सी. So VRMS will be equal to root of 3 into क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे NRT by V. Right? And density I will write as M total divided by V. ये तो cancel हो गया. और अब मेरे पास आ गया N यहाँ पे. I can write this as root of 3RT divided by M total divided by N. What is the total mass divided by the number of moles? याद है? Molar mass M. कैसे निकालते हैं? Exactly, you find it like this only. Right? So then this becomes under root of 3RT by M, where M is equal to the molar. So please write this down and then I'll continue. सर मल्टीपल गैसेस हुई तो हम एवरेज मोलर मास ले लेंगे. मल्टीपल गैसेस होंगी तो उसकी बात अभी बात. एक मल्टीपल को जो वर्ड की फाइल्स है उसमें इनफाइनाइट टाइम टू सेट कर सकते हैं ऐसे. कितने इंग्रेडिएंट्स से मैं केक बना रहा हूँ? कितने इंग्रेडिएंट्स से मैं केक बना रहा हूँ? चौथा नहीं डाल सकते. आया ना समझ? लॉजिक, केक का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? जब भी मन में आए कि मैं ये भी कर सकता था तो केक में मैं और भी कुछ डाल सकता था जो मैं नहीं डाल. अभी आए, अभी मैं करूंगा. अभी तो मैंने केवल एज ए साइड में दिखा दिया मैंने. मैं समझाएंगे. क्या? हाँ अभी आएंगे. विल प्रूव दैट. So that is a separate theorem. क्या बोलते हैं उसको? Theorem of equipartition of energy. पढ़ा भाई? मैं भी बता.
So here you must write using PV is equal to NO. मेरे को R की यूनिट्स नहीं आ रहा है, sorry. You can take the value of R as 25. The RMS velocity of hydrogen at 37 degrees Celsius. ये तेजस्वी भाई. गलत, बिल्कुल ही गलत. सर 25√6 आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत. हाँ, फॉर्मूला है उसका. सर मॉलिक्यूलर मास 2 लेना है. गलत. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? गलत. हाइड्रोजन है. सर H2 लेना है. क्यों 2 लेना है? मैंने केल्विन ही लेना है. ये R का वैल्यू है समथिंग समथिंग केल्विन इनवर्स 8.314. नहीं, सबका आंसर गलत. Everybody has got the wrong answer because you have taken the molar mass of hydrogen as 1 क्या? अरे 1 क्या? 1 लेना है. 1 क्या लेना है? 1 kg नहीं होता है. 1 किलो होता है तो दुनिया अलग हो जाती. 1 ग्राम होता है. Has to be 1 into 10⁻³ नीचे. Molecular mass of hydrogen is 1 gram, not 1 kilogram. एंड ये R की वैल्यू जो है ये SI यूनिट्स में है. ये SI यूनिट है. ये किलोग्राम है इसमें. Now please tell me what is the RMS value? हाँ, तो R की वैल्यू क्या लेता है? हाँ, थोड़ा सी सर 500√30. हाँ, रूट ऑफ 3 into 25/3 into 300. So कितना आएगा ये? 500
which is almost roughly equal to what? Root 30 कितना होता है? सर 5 और मतलब 5.5 जैसे 5 point something होए. 5 point something into 500. 2500 Around 250. ज्यादा होगा इससे? हाँ सर ज्यादा है नहीं, अगर ये रूट 36 होता तो ये 3000 होता, रूट 25 होता तो ये 2500 होता, तो इट मींस समवेयर अराउंड 2700 और वाह क्या घड़ी है. हाँ जरा एग्जाम में घड़ी नहीं लौट रही. 27 बस हो गया. क्या यूनिट्स क्या है? That is 2.7 kilometers per second. And 27 degrees Celsius is the temperature maybe right now in this room. So if you were to release hydrogen gas here, hydrogen I know exists as H2, so you get a 2 here, which would not make a very big difference. So the speed of hydrogen gas in this room, the speed of a single hydrogen molecule, the average speed, would be around 2 kilometers per second. Immediately यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चला जाए. Okay. That is why, by the way, there is no hydrogen in our atmosphere, because 2 kilometers per second hydrogen यहाँ है ऊपर गया 2 kilometers per second, right? And as it goes up, the temperature will reduce decrease. नहीं एक मिनट, पहले डिक्रीज होएगा लेकिन फिर इंक्रीज होएगा. क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोपॉज बोलते हैं ना. I don't know. But the temperature will first decrease and then it will increase. So once hydrogen reaches that level, it will go out of the atmosphere. In fact, if you work out the RMS velocity of oxygen, nitrogen, and all the heavy gases at 27 degrees Celsius, you will find that it is higher, greater than the escape velocity of the moon. And that is why there is no atmosphere on the moon. Okay? Yeah. Deja vu हो रहा है ना? सब होने वाला. And because इसके बाद क्या बोला था? डेजा वू बता. जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि वहां से हाइड्रोजन भी एस्केप नहीं कर. That is why Jupiter's atmosphere is mostly. Alright, chalo, okay. We continue from here. So if I were to take this equation, if I were to take this equation, and if I were to say that since we are dealing with an ideal gas, I know that V is equal to nRT, therefore nRT is equal to 2 by 3 N into half m Vrms. Now, what is the relationship between N and N? Sir, Avogadro N is number हाँ सर
Avogadro number. Capital N by small n is Avogadro. Capital N by small n is equal to ये number of moles है, ये total number of molecules है, तो ये क्या आ जाएगा? Avogadro number आ जाएगा. So I can write this as RT, okay, is equal to 2 by 3 Na half mv square, right? Okay. Then I can write this as half mv Rms square is equal to 3 by 2 R by Na into T. हाँ, ये क्या है? So Boltzmann constant K. By Na is the Boltzmann constant. Right? Okay. So we know the value of this, right? Very easy to work out. 25 by 3 divided by 6.023 into 10.23. Boltzmann could not work it out, and therefore he committed suicide. उसके suicide he committed suicide, and उसके death के 2-3-4 साल बाद then somebody actually worked out. मतलब मैं थोड़ा सा morbid मजाक कर रहा हूँ. I don't know whether he committed suicide because he could not work it out. Maybe कुछ और reason रहा हो. I don't know. But IIT में नहीं हुआ हो. इसीलिए suicide किया हो. So this is half mv Rms squared is equal to 3 by 2 kT. Okay, this is a very profound equation. If you think about it, it is telling me that if temperature T is known, then the average kinetic energy of a single molecule or atom is known. Right? And this is the proof that temperature is a measure of the average kinetic energy of atoms. Okay? The factor is K. This 3 by 2 also plays a very big role. I will tell you what that is. So if you see a textbook, then they will write it something like this. Kinetic energy per molecule is equal to 3 by 2 K. So, है ना फैक्टर, लेकिन चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हम बोलेंगे कि अगर हमें टेम्परेचर मालूम है तो हमें एक मॉलिक्यूल की एवरेज कनेक्ट. ओके, आई वांट टू डू 2 थिंग्स. मैं 2 चीजें यहाँ पे और बताना चाहता हूँ. पहला है that there is a theorem, and again I'm very sorry, this is without proof. This is coming from statistical mechanics, so I cannot really start the proof of this here. So this is called theorem of equipartition of energy, and this tells us that kinetic energy
per molecule per degree of freedom. Degree of freedom is equal. क्या है degree of freedom? क्या मंडी का इलाका आया था थर्मोडायनेमिक्स में? हाँ सर। चल पीछे चल एक टेबल बनाया था अपन ने। ये देख डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। हाँ ये डिग्री याद है ना सबको डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। यस सर। तो ये जो हमने एनालिसिस किया मैंने तो यहाँ पे मिटा दिया, लेकिन ये जो हमने एनालिसिस किया ये एनालिसिस किसके ऊपर किया? ये तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर किया ना। मैंने तो एक पॉइंट पार्टिकल बनाया था ना, उसमें जो v वेलोसिटी से जा रहा है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 1 3। This yes. is the kinetic energy per molecule of a monoatomic molecule. Monoatomic molecule. Okay. This means that kinetic energy per molecule per degree of freedom is equal to kT by 2. This is the theorem of equipartition of. So if you tell me the temperature of this room, not only can I tell you the average kinetic energy of a molecule in this room, but I can also tell you the x component of velocity, the y component of velocity, the z component of velocity, because this would be the kinetic energy per degree of, right? So half mv x square would be kT by 2. Half mv y square would be kT by 2. Half mv z square would be kT. So what can you tell me about the average kinetic energy of a diatomic molecule? कितना हो रहा है? What will be the average kinetic energy of a diatomic molecule at temperature T? कितना होगा? Kinetic energy per molecule per degree of freedom is kT by 2. How many degrees of freedom does a diatomic molecule have? 5. It's there in your table. हमने table बनाया. So this must be 5 kT by 2. What would be the ratio of rotational kinetic energy to translational kinetic energy? Rotational kinetic energy आपने अभी पढ़ा नहीं. How much energy is there in rotation? How much energy is there in translation? 3 kT by 2 is the energy in translation. And 2 kT by 2, which is kT, is the energy of rotation. Kinetic energy per molecule per degree of freedom is kT. अगर किसी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, 6 kT by 2, 5 है, 5 kT by 2, 3 है, 2 kT. And the second thing that I would like to tell you is that if the kinetic energy per molecule, and back to monatomic molecules. If the kinetic energy per molecule is 3 by 2 kT, then what will be the kinetic energy per mole? एक मॉलिक्यूल की kinetic energy है
एक मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फोन केवल मेरा बजेगा। 3/2 इसका फोन ऑफ करें। 3/2 K into NAT, and K into Na is what? Silent. अगर तेरा फोन बजा तो सामने है। K into Na क्या हो जाएगा? 3/2 R. So therefore, what will be the kinetic energy of n moles? ये 1 मोल का है 3/2 nRT, right? I can write this as n into 3R/2 into T, right? And since I'm talking about monoatomic molecules, since I'm talking about monoatomic molecules, 3R/2 क्या होता है? CV. Therefore, the kinetic energy of n moles of a gas, moles, NCVT. Diatomic होता तो 5/2 आ जाता, क्या फर्क? So what will be what is this ये चीज क्या? ये इंटरनल एनर्जी है। रिमेंबर इंटरनल एनर्जी का मैक्रो माइक्रो, राइट? So macroscopic internal energy, microscopic sum of kinetic energies of all molecules, and this is indeed the sum of kinetic energy of all molecules. So this is internal energy, internal. U is equal to NCVT, right? And therefore delta U must be, which is the proof that I said that I will do. Or this way, I have not invoked any process. Right? There is no process here. This is independent of any process, and therefore my statement at that time that this is independent of process. अबे देखना, पन्ना पलटना, पन्ना पलट, जहाँ टेबल बनाया था, पहला टेबल जो बनाया था, मैक्रो माइक्रो, हाँ, एक इंटरनल एनर्जी क्या है? ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ये एक मोल एटम्स की काइनेटिक एनर्जी, एंड मोल्स काइनेटिक की काइनेटिक एनर्जी, यही तो इंटरनल एनर्जी है बाय डेफिनेशन। Okay, so this is the proof, and big problem.
Now you have read about, can I rub this out? ये लिख लिया. Now you have read about you have read about two more velocities. Right? You have read about two more velocities. The average speed that you were just telling me, और दूसरा कौन सा था? Most probable velocity. दो चीजें आपने और पढ़ी है. RMS तो अपन ने निकाल लिया, ठीक है. अब अपन को ये दो निकालना है. कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं? मैसेजेस भी चेक कर लिया. सब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं. अंदर रख बैग में उसको. हाँ, कैसे डिराइव करते हैं? हाउ डू यू डिराइव? So if we talk about the molecules of the gas inside the container, then I took, like I said, a very simplistic approach. And in my simplistic approach, what I did was, I said that Vx is equal to Vy is equal to Vz. End of story. तो basically मैंने क्या बकवास किया उसमें कि irrespective of the molecule, सारे molecules की velocity same. Vx is equal to Vy is equal to, which is not the case. So then a brilliant physicist called Maxwell comes along and he says that the velocities of the molecules in a gas must have some sort of a distribution. Okay, it cannot be random sort of thing, but must have some sort of a distribution. So this is called the Maxwell-Boltzmann distribution of velocities. And this is the fraction of molecules, and this is the velocity. So what it tells us is that a small fraction of the molecules will have very small speed. Small fraction of the molecules will have a very large speed. The majority of the molecules will have a particular speed, which is called the most probable velocity. Now, if you look in HCV, they have actually given an expression, or they have actually given a equation of this graph. So dn by n must be some function of velocity, right? अभी तो एक ग्राफ बना है. So वो function itself is not important to us. What is important to us that Tn is equal to n into f of. This function of v I can also give you. Okay? This function of v can be given to you in a question. The purpose of the exercise is that if this function is known, whether it is the original Maxwell function or some other function which I decide to give you, you should be able to work out the average speed as the most probable. So what is the condition for most probable velocity? Maxima. Maxima का मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं theoretical नहीं, मैं mathematical पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे ये फंक्शन गिवन है तो मैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? To find the most probable velocity, what will I do?
मैक्सिमा निकालेंगे ना, तो मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, तो यू विल डू dn by dt is equal to 0. Now if you put in here the Maxwell function and do dn by dv and put it equal to 0, you are going to get a very unique answer, and that answer will be what? Root of 2RT by n. है ना? मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ क्योंकि मैं आपको फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, बट उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि ये फंक्शन मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो सकता है या आई कैन गिव यू a function, right? So this is how you will derive. And how will you find the average? How will you find the average? The average of anything कैसे बताऊँ? dn by n, fraction of molecules. dn, जितने number of molecules selected है divided by total. Average कैसे निकालते हैं? Average of x निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? x1 plus x2 plus x3 plus xn divided by, है ना? तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका एक और तरीका होता है. अगर ये x1 x2 xn इस तरीके से ये x नहीं वेरी कर रहा है, ये x कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तब कैसे एवरेज निकालें? It will be integral of x dn divided by integral of dn. Okay. So here also to find the average speed, you will do integral of f b dn divided by integral of, and if you put the Maxwell equation here, you are going to get what? Under root of 8 RT by, so these two results, remember, are for Maxwell function. You get this. हाँ, लेकिन ऐसे लिखा जाए, मैं आपको n एज ए फंक्शन, यहाँ पे मैं n एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दूंगा ना, तभी तो ये इंटीग्रेट होएगा. अबे सुन ही नहीं रहा है तू, सुनना ही नहीं है रखो. मैं n एज ए फंक्शन ऑफ b दूंगा, n एज ए फंक्शन ऑफ b दूंगा, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो वही फंक्शन ऑफ b, वो इंटीग्रेशन वैसे लिख कर को ऐसे ही करना होगा.
अरे एम क्या है बे? VRMS क्या है? ऑफ सारे मॉलिक्यूल का रूट मीन स्क्वायर निकाला तो क्या मिलेगा तेरे को? एवरेज किस चीज का? अबे सारे एज का तू एवरेज निकालेगा क्या मिलेगा तेरे को? एज ही मिलेगा ना। तो यहाँ क्या मिला? हाफ इंटू मास मॉलिक्यूल इंटू वेलोसिटी क्या होगा? ओके आइडियल गैस हो सकता है। In a cubical container, of side 1 meter, in a cubical container of side 1 meter containing helium gas, one molecule or one atom is found to one atom which is moving parallel to one face of container is found to make 1000 collisions with one wall per second. Find temperature of gas. Find mass of gas. 1 मीटर क्यूब का कंटेनर है क्यूबिकल, उसमें हीलियम गैस है, एक एटम हीलियम का which is moving parallel to one of the faces is found to make 1000 collisions per second with one wall. What is the temperature of the gas and what is the mass?
उनको है। ये 1000 collisions देके मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? What am I trying to Sir, velocity of that particle is 2000 meters per second. velocity. हाँ सही बोल रहा था आगे बोल। दिमाग लगा थोड़ा। 1000 काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में डाल के टेम्परेचर आ सकता है, मतलब K is equals to 3/2 KT. नहीं which is moving with ये याद which is moving parallel to one face of the container with Rms. ठीक है। And you can take R as 25/3. इस फॉर्मूले में तेरे को क्या निकालना है और क्या मालूम है? ये फॉर्मूले में नंबर ऑफ कोलिजन कहाँ लिखा है? टेम्परेचर मालूम ही है तो फिर तो ये टेम्परेचर निकालना है। हाँ और पता है? हाँ फिर और VRMS नहीं पता तो टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर निकालने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी टू फाइंड व्हाट VRMS। So from the data given, can you tell me what is VRMS? Sir, temperature 320 सर Kelvin. नहीं देखना, सर देख। हाँ कितना? 320 Kelvin. 8 volts to 1000 per सर टेम्परेचर बहुत बड़ा है। क्या? टेम्परेचर क्या बड़ा है? कितना? बहुत ज़्यादा बड़ा है। नहीं। थोड़ा सोना गड़बड़ लग रहा है। क्या सर? नहीं गड़बड़ लग रहा है। 160 आ गया। हाँ? 1000 collision है, 1 volt मतलब कि 2 बार ऐसा आ रहा है। एक वॉल से 1000 बार 1 सेकंड। हाँ। उसका स्पीड 2000 मीटर। वो यूआर में अबे एम क्या लिया तूने? हाँ ओ VRMS 1 है। वन 1000 कोलिजन है। हाँ ये 1 मीटर है। सपोजिंग एक बॉल ऐसे गई, वहां पे हिट करी, वापस आई, हिट करी, वापस आई, हिट करी, वापस आई, हिट करी, 1000 बार वहां हिट करी। 1 बॉल है ना। 1000 collisions with 1 wall per second। तो इससे अगर 1000 collision है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? कितना? 2 सक्सेसिव कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 2 मीटर्स ना। 1000 सक्सेसिव कोलिजन में कितना? 2000 मीटर्स 1 सेकेंड में। तो स्पीड कितना है? VRMS आ गया ना। VRMS आ गया तो T आ गया। दैट इज द होल। किलोमीटर ऐसा ही नहीं होता, नहीं ग्राम होता है।
कितना आया आपका? और एक कंप्लीट वो एटम को मतलब पूरे वॉल के पास ही मतलब वो एटम वो वॉल के पास तभी तो वो 1 मीटर वास्ते है ना, तो बीच में ये दो वॉल किया और एक वास चिपका हुआ है तो वो मतलब स्पाइडरमैन समझा है क्या? मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ ना, क्या बोल रहा है? मास बहुत ज्यादा कम आ रहा है नहीं यार, ये क्या है? क्या कर रहा है? क्या हो गया तुम लोग को? बड़ा शानदार हुआ फिर। तो मेरा टेम्परेचर 320 आ रहा है, वो 160 नहीं आया। क्या बोल रहा है? 1000 पर सेकंड बता रहा हूँ। Okay, so we have distance traveled in 1 second is equal to 2000 meters. I hope everybody is agreeing with this. ज्ञान बांट रहा है। ये समझ में आया? हाँ सर। ब्लैंक है तो ये समझ में आया? कैसे आया ये? दो कोलिजन के बीच में 2 मीटर्स, 1000 कोलिजन है, 2000 मीटर। तो VRMS कितना है? 2000 meters per second. VRMS is equal to root of 3RT by M. Right? So 2000 into 2000 square, VRMS square, हाँ सर। हाँ। is equal to 3 into 25 by 3 into P divided by M. 2 into 10 power minus 3. 2 into 10 power minus 3. 4. अबे हीलियम है सर 4 क्यों? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। हाँ सर। तो ये कितना आएगा? 3 कैंसिल हो गया सर वो 160 आ जाता है। 4000 by 25। ये इधर से ये कैंसिल हो गया। हाँ सर 4000 by 25 160 आता है। T is equal to 2000 into 2 divided by 25 into 4. कितना है? पलाश सर 650 आ रहा है। कितना आ रहा आ रहा है। मास कैसे निकालेंगे? सर K is equals to 3 by 2 kBT.
नहीं, मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ गैस CV इज इक्वल टू nRT। T आ गया, CV और nRT से निकलेगा नॉर्मल। सर मैंने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kBT यूज करने बोला। अरे तो वो तो वन मॉलिक्यूल का मास निकलेगा। हाँ सर तो CV नहीं सर, सर CVNT यूज कर सकते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। ठीक है, अब आ जाएगा कोई इशू सीधा। क्या बोल रहा है? बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ रही है मोल्स की हाँ नंबर। छोटी वैल्यू है। बहुत स्मॉल वैल्यू है। एक this is what you should have done. Chapters 24 to 27, उसमें की 25, 26, 27 थर्मोडायनामिक्स, कैलोरीमेट्री, ये सबसे पहले हो जाना चाहिए। मेरा मुंह खुला है इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने नहीं किया। हाँ 27 भी तो दिया था। अभी क्या करना है? 24 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हाँ ठीक है ठीक है। तो मास ऑफ गैस निकालना है कंटेनर में, मास ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ा निकालना है। एन कहाँ से पता चल गया? निकाल आ जाए। मैं जा रहा हूँ अभी, इसकी क्लास है ना, बताया ना, सेमेस्टर आएगा।